वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल। सो आज के इस एपिसोड में IRCTC का जो रेलवे ऐप है, आई एम गोना रीडिज़ाइन एंड आई एम गोना डू सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस सो दैट इसका UI एंड UX इम्प्रूव हो सके। तो आप देख सकते हो कि राइट हेयर इन दिस पर्टिकुलर ऐप में ये जो वाला सेक्शन है ना, बैक वाले आइकन पे जब व्हेन वी गाइस क्लिक ना, तो ये बैक दैट मीन एग्जिट कर देता है ऐप से। बट आई डोंट रियली थिंक कि ये यहाँ पे रेलेवेंट है। तो इंस्टेड ऑफ दिस बैक आइकन आई एम गोना use here menu icon, so that if user gonna click on this particular menu icon, then that user can see lot of feature of this particular app में। और यहाँ नेविगेशन बार में भी थोड़ा सा बटन नेविगेशन बार है ना, उसमें भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम है विच आई एम गोना सॉर्ट आउट हियर इन दिस एपिसोड। सो लेट्स रीडिज़ाइन दिस पर्टिकुलर ऐप वन मोर टाइम। So what exactly I'm gonna do first, I'm gonna design this bottom navigation bar, and right here you guys can clearly see there are 5 icons. But what exactly I'm gonna do ना, I'm gonna put right here only 4 icon. So मैं यहाँ पे home icon को choose करूँगा, account को choose करूँगा, shop को and also the transaction। और ये जो more icon है ना, इसे I'm gonna put right here in place of the back icon। In order to create this particular bottom navigation bar, we have to create a frame like this one, and we have to create one more frame so that we can put that particular home icon inside that particular frame। और इस जो सेकंड वाला फ्रेम है उसका जो कॉर्नर रेडियस है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दो ताकि राउंड शेप आ जाए लाइक दिस वन। And then after put that particular home icon inside the frame, or you can also write here the name of that particular icon। जैसे वो home icon है तो you can put right here home icon, और उसे इसका जो font है थोड़ा tall कर दो ताकि छोटा दिखे so that, and select both the frame and text and create here auto layout। Now it's time to select all those icon which I'm gonna use here in the bottom navigation bar, and create a set of component ताकि later on I can do changes, whatever changes I want to do in this particular icon में, and copy the icon from the component and paste this icon inside this particular frame like this one। और इस पर्टिकुलर फ्रेम को सेकेंड फ्रेम में पुट कर दो एंड मेक दैट पर्टिकुलर फ्रेम अलाइन इनसाइड दैट पर्टिकुलर फ्रेम। और राइट क्लिक करके यू कैन क्रिएट ऑटो लेआउट हेयर एंड डुप्लीकेट द आइकन एज पर द आइकन नीड। सारे आइकन को उस पर्टिकुलर नेविगेशन बार में प्लेस करने के बाद इट्स टाइम टू पुट दैट पर्टिकुलर नेविगेशन बार इनसाइड द फोन स्क्रीन लाइक दिस वन। You can always play with the horizontal padding and also the distance between the icons. So as per your need and requirement, you can vary the distance between the icons and also the padding। And you can also create a stroke on the top of this particular navigation bar thoda, and you can choose a darker color so that thoda sa visible ho on the screen। And you can select the smaller frame inside the navigation bar and change the color as here in this particular IRCTC app में जो है। And you can also change the color of this particular home text। Now we have done with the bottom navigation bar. Now it's time to design this particular area। So like here you can clearly see कि they have added here a gradient in this particular area, but I'm not gonna use here gradient। I'm gonna use a single color ताकि थोड़ा सा app more visible हो and अच्छा दिखे।
So in order to create that particular area, select a frame and create on the top of this particular screen, and you can always play with the size of this particular area which I'm going to design on the top of this particular frame, and add one color, and I'm going to choose here the darker red color, like this one color I'm gonna choose. And you can place this particular menu icon inside this particular frame, and you can also resize the size of this icon as per your need and requirement. And I'm also gonna change the color to white like this one. Now it's time to add that particular text, that is the IRCTC rail connect on the top of that particular frame में, like this one you can add. And I'm gonna choose here 16 the size of the font, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा भी ना दिखे और ज़्यादा छोटा भी ना दिखे. Now it's time to design this particular section. आप यहाँ पे देख सकते हो multiple like कार्ड वगैरह यूज़ करे गए हैं, और inside this particular card you can see कि आइकन्स वगैरह यूज़ करें हैं. तो मैं भी आइकन्स यूज़ करने वाला हूँ, मल्टीपल आइकन. एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस पर्टिकुलर बैनर सेक्शन. ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड दिख रहा है, एंड आई एम गोना इनहेंस दिस पर्टिकुलर बैनर, एंड आई एम गोना डिज़ाइन राइट हियर हॉरिजॉन्टली, ताकि थोड़ा सा मोर एस्थेटिक दिखे एंड थोड़ा सा अच्छा भी दिखे. And now it's time to design the card where I'm gonna add multiple icons. In order to create this particular card, I'm gonna create here one frame, and you can always play with the size of this particular card. And now it's time to add a stroke inside that particular frame, and I'm gonna increase the corner radius up to 9. Then after I'm gonna select that particular frame, and I'm gonna decrease the intensity of the stroke color, and also I'm gonna increase the stroke so that it can clearly visible. So before creating that particular card, I'm gonna select all those icons which I'm gonna use here in this card, and gonna create a set of component so that later I can do changes as per the need. And I'm gonna increase the size, and I'm gonna place that particular icon inside this particular frame, or I can say that card. Now it's time to add text just below the card, or I can say the frame, and I'm gonna align this particular text and the card frame and the text, and then gonna add here auto layout. And after adding auto layout, I'm gonna create a component so that later on I can do changes as per the need. And then after, I'm gonna copy the variant from there, and I'm gonna paste this particular variant inside this particular mobile screen like this one. Now what exactly I'm gonna do here, I'm gonna select that particular icon from the variant, and I'm gonna choose that color which has been already in this particular IRCTC app में जो है. And I'm gonna duplicate this particular variant, and I'm gonna add all those icons which already inside this particular app में है, like this one. Now it's time to design this particular banner section. ये vertical banner को I'm gonna design horizontally. तो चलिए डिज़ाइन करते हैं. Now it's time to design this particular area. इस particular area को डिज़ाइन करने के लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके डिज़ाइन करूँगा. सो चलिए डिज़ाइन करते हैं इसे भी.
So we have done with the design part. It's time to do the comparison between the present screen and the design which I have proposed. So clearly you can see कि ये जो back icon है, instead of this particular back icon I have provided here hamburger menu, और थोड़ा सा जो ये कार्ड का जो साइज है उसे भी इंक्रीज कर रहा है ताकि ये थोड़ा सा मोर विजिबल हो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंस्ट्रेंट। तो इस पर्टिकुलर बैनर को भी ये वर्टिकल बैनर है, तो इंस्टेड ऑफ द वर्टिकल बैनर आई हैव डिज़ाइन हेयर हॉरिजॉन्टल। थोड़ा सा ये मोर एस्थेटिक दिख रहा है इन कंपैरिजन टू दिस वन, और ये थोड़ा सा वियर्ड भी है, इट इज़ नॉट दैट मच विजुअली अपीलिंग, आई कैन से दैट। और नाउ कमिंग बैक टू द बॉटम नेविगेशन बार, लाइक इन्होंने 5 आइकन ऐड करा है, तो हमने यहाँ पे लाइक द डिज़ाइन विच आई हैव डिज़ाइन, यहाँ पे आई हैव प्रोवाइडेड हेयर ओनली 4 बॉटम नेविगेशन बार। और ये जो मोर आइकन है ना, इंस्टेड ऑफ द मोर आइकन आई हैव प्रोवाइडेड हेयर हैम्बर्गर मेन्यू। जो मोर आइकन में आइटम्स वगैरह होंगे राइट हेयर इन द हैम्बर्गर मेन्यू में भी अवेलेबल होंगे व्हेन द यूज़र गोना क्लिक। So thank you for watching this video. If you like this video, you can subscribe my channel and also hit the like button. So see you next time. Keep designing.